weapon system integrated Rudra, and 2 advanced light helicopters flew above Army aviation. In tandem formation, approaching the the video of Lieutenant Colonel Sumit Bunyad and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Marching with zeal and elegance, with strong belief of unity and strength in their hearts. Here comes the Jat Regiment, contingent led by Captain Rishabh Singh Sambyal. The motto of the regiment is Sangathan Bhavirta, with the war cry Jat Balwan, Jai Bhagwan. The regiment traces its origin to the year 1795. In their glorious history of more than 2 centuries, the Jat Regiment has actively participated in World War I and World War II. दुर्गम पहाड़ियों पर आसानी से चढ़कर दुश्मन को पराजित करने में महारत गढ़वाल राइफल्स 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में 3 विक्टोरिया क्रॉस 34 युद्ध सम्मान। युद्ध में है ऐसी पहचान, लिए पांव में बिजलियां, बाण हाथ तूफान। युद्ध घोष बद्री विशाल लाल की जय। देश पर आंच न आने दी रौंदा अरी को बार बार। आज हिंद भी जान उठा है, उठ खड़ा जब जब महान, उठ खड़ा सैनिक महान। Ladies and gentlemen, approaching the saluting stairs, the Mahar Regiment, contingent led by Lieutenant Subhayu Bose of the 3rd Battalion, the Mahar Regiment. War cry, Bolo Hindustan ki Jai. The motto of the Mahar Regiment, Yash Siddhi. The regiment participated in Burma, Persia and Iraq during the World War. और अब सैलाबी मंच तक पहुंचता स्वागत कीजिए स्विस रेजिमेंटल सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू एवं कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के साइंस बैंड दस्ते और साथ बैंड बाद बैंड दस्ते का नेतृत्व सुबेदार करवन सिंह के हाथों में। इनका साथ दे रहे हैं हवलदार संतोष कुमार, सुबेदार अशोक कुमार और बैंड बजा रहा है सरहद के रखवाले की बंदूक। सलामी मंच तक पहुंचता अगला दस्ता जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं बटालियन के मेजर हरीश कुमार। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्ता रणवीरता, घोष है दुर्गा माता की जय। रेजिमेंट का गठन डोगरा राज्य के संस्थापक महाराज गुलाब सिंह द्वारा सन 1820 में स्टेट फोर्सेस के रूप में किया गया। रेजिमेंट को 15 जनवरी 1957 को भारतीय थल सेना में मिलाया गया और इसे जम्मू एवं कश्मीर रेजिमेंट के रूप में जाना गया। Roads filled with gunpowder, shadow of death at every step. Yet our soldiers never stop, because the Bengal Engineer Group safeguards their every step. भारतीय सेना की सबसे युवा बटालियन में से एक, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय योद्धा शामिल हैं। राजपथ पर पहली बार अपने शौर्यपूर्ण कदमों के निशान छोड़ते हुए देश की अखंडता एवं एकता का प्रतीक मद्रास टेरिटोरियल आर्मी। युद्ध घोष वीर मद्रासी अडिकुल्लू अडिकुल्लू अडिकुल्लू। Now approaching the saluting dais is the Naval Brass Band. World-renowned Naval Brass Band today led by Surit
नेतृत्व में अगला दस्ता भारतीय नौसेना के रणबांकरों का। प्लाटून कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर सुने फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला, सब लेफ्टिनेंट अगस्त्य चौधरी और साथ ही 96 युवा सैनिक शानदार। भारतीय नौसेना के अदम्य शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है। Following the Air Force band is Flight Lieutenant Tanik Sharma, leading the contingent of the Indian Air Force comprising 96 airmen and 4 officers. Lieutenant Apurva Yadav, Flying Officer M. Murali and Flying Officer Kutappa follow the contingent commander. The air warriors marching with rifles and Gagal Shastra, while the pistols of the officers are secured in their holsters. Every step put forward on this Rajpath to achieve their motto, Nabha Sprisham Tirtham, or touch the sky with glory. Depicting the theme, innovate, integrate and dominate, here comes the Indian Air Force tableau showcasing the scaled-down models of light combat aircraft, light combat helicopter, Sukhoi 30 MKI aircraft, Akash missile, Astra missile, Rudra missile and Rohini radar. Commemorating the golden jubilee of our feat in the 1971 war, the tableau specially highlights the aerial attack carried out by the Indian Air Force on the Governor's House in Dhaka on 14 December 1971 that led to speedy surrender of the Pakistani troops, thereby leading to the liberation of Bangladesh. The smartly attired officers in their flying overalls stand along the models. Squadron Leader Mayank Abhishek, Squadron Leader Gaurav Bose, Flight Captain Aman Sharma and Flight Captain Bhavna Kant. Now gradually coming up detail tableau from the Defence Research and Development Organisation DRDO, led by Commander Abhishek C. Gawande of the Sudarshan formation consisting of 1 Chinook and 2 Mi-17 1B helicopters flying in wing formation. The formation led by Group Captain Siddharth Rawat. The other members of the formation are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra. And there you can see Sudarshan formation comprising 1 Chinook and 2 Mi-17 प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए विश्व की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक Sudarshan state-of-the-art precision attack helicopter Apache in the Indian Air Force has provided the Indian Armed Forces a significant edge over the enemy on the battlefield. And you can see Rakshak formation from the Rashtrapati Viman side consisting of 1 flying in wing formation. Formation led by Group Captain Rajshekhar Reddy. The other members of the formation, Group Captain Indubit Singh, Wing Commander Anand Kumar Yadav and Wing Commander Muneet Dogra. Behind Bheem, 30 MKI fighter aircraft that can carry the latest air-to-air as well as air-to-ground long-range missiles. The Sukhoi 30 Netru formation, the AWNC aircraft airborne from Air Force Station Uttarleh by the Sukhois airborne from Air Force Station Jodhpur. Formation flying at 420 km/h. With GBS Chauhan Vayu Sena Medal with Squadron Leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. And there you can see Garuda formation. C-17s airborne from Air Force Station Bhinder, MiG-29s from Air Force Station Mal, while the Sukhois from Jodhpur. Group Captain Jiju Jose Ovalal and Wing Commander Nitin Nagarkoti flying in the 29th. And there you can see immaculate formation for the formation comprising 3 Sukhoi 30 MKIs. As the aircraft come over us, the 3 aircraft will split outwards and upwards, forming a Trishul or a trident up. And there you can see 3 Sukhoi 30s. Helicopters, part of
जाएगा कि डिस्प्ले टीम दे शैल फ्लाई पास्ट इन विक्ट्री फॉर्मेशन ट्रेनिंग कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। साधन दल के हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के 3 कमांड ऑफ कैप्टन कीरत सिंह शाह ने चेक विंग स्क्वाड लीडर किसले कान। Even disappear in the blue yonder, signifying the motto of the Indian Army. Today, winter of subdued achievement to a new spring. A day when we can make ourselves a role model for growth and cohesiveness for the rest of the world. अब नए उत्साह नए इतिहास बनेंगे। चमकीले इस सदी के चावल पीले दम के घेरे तोड़ेंगे हम नई। The morning breeze, white breeches, Napoleon boots and spurs, all alone looking magnificent, assured and proud. Commandant Colonel Anup Tiwari, astride the raft. Second in command, Lieutenant Colonel Shardul Sabiti, astride the craft. Division 1 under Risalda Major Milkar Singh. Division 2 Risalda Harpal. जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा। हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा।